हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द ICT 100% श्योर टॉपिक रिवीजन। ठीक है, पेपर 1 यूजीसी नेट जून 2025। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। ठीक है, असर्शन एवरी जनरल पर्पस ऑफ कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन इट। ठीक है, दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट। एंड रीजन क्या बोला जा रहा है, रीजन पर when and the computer cannot communicate directly, this statement was also correct. So option number 1 was the correct answer. Both A and R is true and R is the correct explanation of A. ठीक है, next question number 2, identify the correct order of the following storage capacity, rank largest to the smallest capacity. ठीक है, फर्स्ट में आएगा D 2 TB बाइट्स, उसके बाद आएगा A 1500 MB बाइट्स। ठीक है, मेगाबाइट्स। उसके बाद आएगा C 1 GB बाइट्स, 1 GB। ठीक है, उसके बाद आएगा B 5K बाइट्स। सो ऑप्शन नंबर 1 वाज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है 2। ठीक है, देयर इज 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्मार्टफोन हैज बोथ Bluetooth and Wi-Fi technology. ठीक है, स्टेटमेंट 1, Wi-Fi has shorter range than Bluetooth. This statement was false because Bluetooth is the shorter range. ठीक है, and statement 2, Wi-Fi can transmit data at faster than the Bluetooth. This statement was true. So option number 4 was the correct answer. Statement 1 was false and statement 2 was correct or true. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द ब्लूटूथ एंड वाईफाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, computer terms and purpose, OCR used to scan types of the handwritten documents. ठीक है, and B2OMR used to mark the multiple choice examinations, and email asynchronous communication, C3, and instant messaging synchronous communication. So option number 3 was the correct answer. ठीक है, next क्वेश्चन नंबर 5, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। ठीक है, लिस्ट 1 एंड 2, ईमेल अटैक्स एंड डिस्क्रिप्शन। फिशिंग ये 3 होगा। ठीक है, फिशिंग वाज ए fraudulent communication that appears to come reputable person। ठीक है, एंड B1 होगा स्पैमिंग। स्पैमिंग वाज ए unsolicited bulk message sent without explicit consent from the recipient। ठीक है, एंड स्पूफिंग, स्पूफिंग C2 होगा। ठीक है, एंड email message obtained from the someone or somewhere other than the intended sources। ठीक है, तो C2 एंड D4 होगा। ठीक है, ransomware is a subset of malware that is used to encrypt the victim's file. So option number 3 was the correct answer. Next question number 6, the @ sign required for the all SMTP simple mail transfer protocol email address that is divided in option number 1 the name of the user from the user's internet address was the correct answer, option number 1. Next question number 7, the domain name cannot be longer than 254 characters and username cannot be longer than 64 characters long। ठीक है, so option number 1 was the correct answer। ठीक है, next question number 8, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एड्रेस द buses in the computer system। statement 1, address bus carries a single relating to the addresses between the processor and the memory। ठीक है, and statement 2, it is a bidirectional। in the light of the statement, correct answer was option number 4। statement 1 was true but statement 2 was false। ठीक है,
नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एड्रेस बस वाज ट्रांसमिटेड द address between the processor and the memory, and direction of the bus unidirectional from the processor to memory and input output devices, ठीक है। and data bus was send the data between the processor, memory and input output device, and it was bidirectional, ठीक है। and control bus transmitting the timing status signal and command between the processor, memory and input output device, ठीक है। and it was also bidirectional between processor, memory and input output device। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 1 एंड 2 मैच करने के लिए बोला गया है, ठीक है। मेजरमेंट एप्लीकेशन ये 2 होगा, ठीक है। रिवर पॉल्यूशन, मेजरमेंट एप्लीकेशन रिवर पॉल्यूशन, एंड कंट्रोल एप्लीकेशन B3 ऑटोमेटिक ओवन, ठीक है। एंड मॉडलिंग एप्लीकेशन C1 होगा, ठीक है। सिमुलेटिंग कार क्रैश, ठीक है, क्रैशेस, and expert system was a medical diagnosis, so option number 2 was the correct answer, ठीक है। next question number 10, which of the following statement about the antivirus software are correct, ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर 1 ABC was the correct answer। problem file or the program are coordinated and can be automatically removed, and check all the files before being loaded or run, and use of the database to identify the potential risk, so A, B and C, option number 1 was the correct answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। JPEG के बारे में, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के बारे में। स्टेटमेंट 1, JPEG फाइल यूज टू लॉसी फॉर्मेट फाइल compress the method. This statement was correct, and JPEG is used to store the photograph as a reduction or reduced the file size. This statement also correct, so option number 1 was the correct answer, both statement 1 and 2 true, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statement correct regarding the random access memory और RAM के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1, इट इज द इंटरनल चिप where the data is temporarily stored, ठीक है। दिस स्टेटमेंट वाज करेक्ट, एंड स्टेटमेंट 2, the it stored the part of the operating system currently in use. This statement also correct, so option number 3 was the correct answer, A and B, ठीक है। and it was used to store the BIOS, it is incorrect, and it is non-volatile in memory, it is also incorrect, because RAM was the volatile in nature, ठीक है। so A and B was the correct answer of number 3। next question number 13, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, एक्टिविटी एंड फाइल टाइप्स, रिकॉर्डिंग ए सॉन्ग टू प्ले ऑन एन आईपैड, ये 2 होगा, ठीक है। MP3, एंड सेविंग ए वीडियो, MP4 होगा B3, ठीक है, MP4, एंड सेंडिंग ए फोटो टू सम यूजिंग योर मोबाइल, इट वाज C4 होगा, ठीक है। JPEG, एंड कंप्रेसिंग ए फोल्डर फाइल zip .zip, ठीक है, D1, so ऑप्शन नंबर 4 वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर different types of the computer component, rank fastest to the slowest term in access time। फर्स्ट में आएगा C कैचे मेमोरी, CPU कैचे मेमोरी, उसके बाद आएगा A रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद आएगा D SSD, एंड लास्ट में आएगा ऑप्टिकल ड्राइव, सो ऑप्शन नंबर 4 वाज करेक्ट आंसर, CADB, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क अप टू सेवरल टेराबाइट्स और टीबी, एंड ब्लूरे डिस्क अप टू 50 GB तक स्टोर कर सकता है, पेन ड्राइव अप टू 256 GB और मोर, एंड मेमोरी स्टिक्स सिमिलर टू द ओपन ड्राइव और पेन ड्राइव
up to 256 or more GBs, and DVD up to 4.7 GBs, ठीक है, to 8.5 GBs, ठीक है, and CD up to 700 MB. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन HTML ए 3 होगा, ठीक है सर, मैच होगा, लैंग्वेज यूज टू क्रिएट द वेब पेजेस एंड वेब 2.0 B4 होगा, ठीक है, कोलाबोरेटिव वेब एंड वेब 3.0 C1 होगा, ठीक है, सिमेट्रिक वेब एंड VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल D2 होगा, यूज द इंटरनेट टू मेक द फोन कॉल्स. So option number 1 was the correct answer. Next क्वेश्चन नंबर 16, टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा करेक्ट है बताना है, ठीक है. स्टेटमेंट 1, द बेसिक बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2. The base of the binary number system is 2. This statement was correct. And the binary addition is just like the decimal addition, except that the rules of the much similar. Except that the rules are much simple, ठीक है, simpler. So both statement are correct, ठीक है, और true. Option number 1 was the correct answer. Next question number 17, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन एंड एप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म. सो ये होगा ऑथेंटिक authorizing the language used to create the document and view on the WWE और World Wide Web. ये होगा A3 HTML and computer that respond to request to provide the information service over internet. B4 होगा, ठीक है, internet server and define how the message transmitted and formatted over internet. C2 होगा, ठीक है, HTTP and software that enable the users to access the and view the document or other resource on internet. This is D1 होगा, ठीक है, browser. So option number 4 was the correct answer. Next question number 18, and the following optical storage device in decreasing order in storage their storage capacity. फर्स्ट में आएगा C ब्लू-रे, उसके बाद ब्लू-रे डिस्क, उसके बाद आएगा DVD एंड लास्ट में आएगा CD-ROM. सो ऑप्शन नंबर सॉरी फर्स्ट में आएगा C ब्लू-रे डिस्क, उसके बाद आएगा DVD एंड लास्ट में आएगा CD-ROM, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 2 वाज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में देख सकते हैं, ठीक है, CD-ROM के बारे में CD यहाँ पर डिटेल्स आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स है बताना है, ठीक है. स्टेटमेंट 1, द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल द पेरिफेरल एंड allocate the memory and the processor time. This statement was correct. And statement 2, an operating system provide the internet access, it is incorrect. So option number 3 was the correct answer. Statement 1 was correct, statement 2 was false. Next question number 20, यहाँ पर टू अगेंस्ट टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, कौन सा करेक्ट एंड ट्रू और फॉल्स से बताना है. स्टेटमेंट 1, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम परमानेंटली स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड malware. This statement was false, ठीक है. And statement 2, the use of the internet, cell phones or other devices to send or post the content intended to hurt the other embraces another persons called the cyber bullying. So statement 2 was correct. So option number 4 was the correct answer. Statement 1 is false, statement 2 was correct, ठीक है. Next question number 21, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर टर्म्स एंड डिस्क्रिप्शन. माउस A1 इनपुट डिवाइस, ठीक है, एंड मोडेम B4 नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, एंड पेन ड्राइव C2 होगा, ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी एंड ओपेरा वाज ए वेब ब्राउजर, ठीक है, D3. So option number 3 was the correct answer. A1, B4, C2 and D3, ठीक है. Next question number 22, what is the MAC address, ठीक है, MAC address
और मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ए यूनिक नंबर दैट आइडेंटिफाइज द डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अगेन स्टेटमेंट दिया हुआ है 2, ठीक है। कौन सा ट्रू है और फॉल्स है बताना है। स्टेटमेंट 1, एक्सेस टाइम इज typically started in milliseconds for the secondary storage device and nanoseconds for the primary storage device. This statement was correct or true, ठीक है। And statement 2, average access time can usually improve and defragmenting the data content of a hard disk. This statement was correct. So option number 1 was the correct answer. Statement 1 and 2 was correct, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर टू स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग द राउटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है बताना है। इट वाज एनेबल द पॉकेट टू द routed between the different network. This statement was true and it was work data link layer. It was incorrect. So option number 3 was the correct answer. Statement 1 was true but 2 was false. So option number 3 was the correct answer. Next question number 25, यहाँ पर सम स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एफटीपी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है, ठीक है। यहाँ पर इट वाज यूज्ड टू एक्सेस द वर्ल्ड वाइड वेब, इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड टू डाउनलोड द डेटा ऑन द फाइल सर्वर, इट इज करेक्ट। एंड it is used to a very small file, it is incorrect. And the file is transferred one device to another, it is correct. So option number 3 was the correct answer, B and D. Next question number 26, again match the following दिया हुआ है, types of memory and fabrication method, ठीक है। ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM, ये 3 transistor and capacitor and static RAM random access memory, B1 flip flop memory, ठीक है। एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और PROM, C4 मैट्रिक्स ऑफ यूजेस एंड इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, D2 cluttering the gate transistors and capacitor. So option number 1 was the correct answer. Next question number 27, statement 1, DVD used a single spiral track to store the data working from center to the edge. This statement was correct. And statement 2, DVD are a read-only device. This statement was incorrect. So option number 3 was the correct answer. Statement 1 was true and statement 2 was false. Next question number 28, which of the following statement are true? Option number 1 or A, simplex data transmission is the two directional only, it is incorrect. And half duplex data transmission both directional but not at the same time, this statement was correct. And full duplex transmission is both directional simultaneously, this statement was correct. And serial data transmission is when the data is sent 8 bits at a time over a single wire, this is incorrect. And parallel data transmission is when 1 bits of data is sent down over a single wire, it is incorrect. So option number 4 was the correct answer, of B and C was correct answer, correct, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अगेन टू स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। सर्च इंजन आर वेबसाइट्स that help a user to search for information in www. This statement was correct or true.
And statement 2, for any search term, search engine provide that the exact same result of all users. This is incorrect. So option number 3 was the correct answer. Statement 1 was true and statement 2 was false. Next, question number 30. Again two statement दिया हुआ है. Statement 1, open coding is achieved by linking code to contact to the consequences to pattern to the interaction and to causes. This statement was incorrect. Statement 2, Excel coding is processes of the breaking down the examining, comparing the conceptualizing and categorize the data. This statement was incorrect. So option number 2 was the correct answer. Both statement 1 and 2 was incorrect. Next, question number 31. Read the following statement and choose the correct answer given below. Option number 1 or A, radio frequency identification system use the radio wave to read and capture the information. This statement was correct. And statement 2 or B, MICR magnetic ink character recognition character are easy to forge and cannot be written over. This is incorrect. And OMR was the full form optical mark recognition and read the marks written in the pencil or pen in the specific place or a term. This is correct. And optical character recognition or OCR scan the text and convert into the computer readable format. This statement was correct. And barcode can be forgotten or damaged. Okay, this is also correct. So option number 4 was the correct answer. A, C, D, E. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर assertion and reason दिया हुआ है. ठीक है, assertion ये bitmap file, a bitmap file format BMP is not suitable for the graphics on a website. This is correct. And bitmap graphics store information about every individual picture and the element or pixel making up the image, thereby giving the quite large file. This is also correct. So option number 1 was the correct answer. Both A and R is true and R is the correct explanation of A. Next, question number 33. Statement 1, a copy of the email is sent to a CC or carbon copy address and other recipient can see that addresses. This statement was correct. Statement 2, a copy of email is sent to BCC blind carbon copy address but other recipient cannot be see that addresses. This is also true. So option number 1 was the correct answer. Both statement 1 and 2 was true. Next, question number 34. यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है. ठीक है, statement 1 or A, laser printers use dry ink. This is correct. And unlike the dot matrix and inkjet printer, laser printer do not use up when the ink producing the document. This is incorrect. And laser printer use up property of static electricity. This is also correct. And laser printers produce the ozone gas and teeny toner particulate in the air. This is also correct. So option number 2 was the correct answer. A, C and D. Next, question number 35. Which of the following are the software? B, C, D was the correct answer. Web browser, compiler and device driver. So option number 2 was the correct answer. ठीक है. Next, question number 36. मैच the following दिया हुआ है. ठीक है, name of the memory size and list number of the bits. MB or megabytes.
A3 ठीक है 2 to the power 20 and GB gigabytes B1 2 to the power 30 and TB terabytes C4 2 to the power 40 and petabyte PB. This is D2 2 to the power 50. So option number 2 was the correct answer. Next, question number 37. Which of the following pairs correctly match with the respect of the to the computer? Storage. Statement 1 storage displaying the operations like the arithmetic operation. This is incorrect. And processing or the permanently saving the data, it is also incorrect. And control all the operations, this is correct. So option number 2 was the correct answer, only 3. Next, question number 38. Every time is the computer connect to the network, it is given an the IP address or internet protocol address. Statement 2. Devices never disconnect, retain the same IP address. So both statement are correct or true. Okay. Option number 1 was the correct answer. Next, question number 39. What is another term for the social media? Option number 2, consumer generated media was the correct answer. Next, question number 40. Statement 1, CPU executes the software directly from the secondary memory. This statement was incorrect. Statement 2, software is termed as open source software if it can download from the internet. This is also incorrect. So option number 2, both statement 1 and 2 was false. Next, question number 41. The next number p in the sequence of the binary number. Option number 2 was the correct answer, 1000. ठीक है, तो डन। इस तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।